Hello students, welcome on my video. Today we started your new chapter in statistics is linear correlation. Okay, so आज हम लोग आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स linear correlation chapter number 2. Okay, so first of all we see the meaning and definition of linear correlation. So if there are simultaneous changes in the values of two variables due to direct or indirect cause effect, then it is said that there is correlation between two variable. Means कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोज इफेक्ट से कोई भी टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियस चेंजेस होते हैं उनकी वैल्यूज में, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. ओके, देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर कोरिलेशन. ओके, सो कोई भी थर्ड पार्टी या थर्ड इफेक्ट से कोई भी टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियस चेंजेस होते हैं, दैट मीन्स कोई भी दोनों के दोनों वेरिएबल अप होते हैं, इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं. अदरवाइज one variable are increases and second variable is decreases simultaneous changes, so that is called linear correlation between two variables. Okay students, so I hope you all are understood definition of linear correlation, and let be understood by example of linear correlation. Okay, so here first we take rainfall and yield of rice. Suppose rainfall ये ईयर में ज़्यादा होता है, रेनफॉल इंक्रीजेस, सो यील्ड ऑफ राइस ऑल्सो इंक्रीजेस. अदरवाइज रेनफॉल इज डिक्रीजेस, सो यील्ड ऑफ राइस इज ऑल्सो decreases. Okay, so here these both variable are simultaneous changes on the basis of third factor. Suppose मानसून है, मानसून अच्छा हो रहा है तो हमारा रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, so rainfall are increases, so on the basis of rainfall yield of rice is also increases. Okay students, अगर रेनफॉल कम होता है, रेनफॉल decreases, so yield of rice is also decreases. Okay students, so that means rainfall is cause and yield of rice is effect. Okay, why? because रेनफॉल ज़्यादा होगा तो उसकी इफेक्ट क्या होगी, हमारा राइस भी ज़्यादा होगा, और रेनफॉल कम हुआ सो हमारा राइस भी क्या होगा, कम होगा. सो ये होगा रेनफॉल इज अवर कोज एंड yield ऑफ राइस इज effect of two variable. Okay students, so second example for linear correlation. So expenditure and savings. Suppose अब हम लोग एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा होता है, सपोज 20,000 हमारी इनकम है, उसमें से 18,000 रुपीज़ हमारा एक्सपेंसेस है, सो सेविंग्स हमारी कितनी है स्टूडेंट्स, ओनली 2,000. सो इन दिस केस इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजेस, सो सेकेंड वेरिएबल इज डिक्रीजेस. ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो हमारी सेविंग्स क्या होगी, मंथली कम होगी, डिक्रीज. ओके, बट सिमिलरली इफ आवर एक्सपेंडिचर इज ओनली 2,000, so savings is our 18,000. clear? So in this case expenditure is decrease, so simultaneous savings is automatically increases. okay, एक्सपेंडिचर हमारा कम होगा, डिक्रीज होगा, सो ऑटोमेटिकली हमारी सेविंग्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगी. अंडरस्टूड? तो अब हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर ले डेफिनेशन. इफ देयर are simultaneous changes in the values of two variables due to direct or indirect cause effect, then it is said that there is correlation between two variable. Their correlation is said to be linear correlation. So I hope you all are understood what is the meaning and definition of correlation. Okay, so please note down this definition and both example in your notebook. Okay students, so students let me see types of correlation. So mainly two types of correlation. First one is positive and second one is negative correlation. Okay students, so first of all we see positive correlation. So when the changes in the values of two correlated variables are in the same direction, the correlation between them is said to be positive. That means कोई भी टू वेरिएबल से, कोरिलेटेड वेरिएबल से
उनकी जो वैल्यूज है उनमें जो चेंज होता है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होता है. सपोज कोई इंक्रीज हो गया है, वन वेरिएबल इज increases, so another variable is also increases. Otherwise first variable is decreases, so another variable is also decreases. Like rainfall and yield of rice. Suppose rainfall increases, so yield of rice also increases. Understood? And if rainfall are decreases, so yield of rice is also decreases. सपोज दोनों के दोनों हमें क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होता है. अगर कोई फर्स्ट इंक्रीज होता है तो सेकंड भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इंक्रीज ही होना चाहिए. अगर फर्स्ट इफ फर्स्ट वेरिएबल इज डिक्रीजेस, सो सेकंड वेरिएबल इज ऑल्सो डिक्रीजेस. दैट मीन्स सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए. क्लियर? अंडरस्टूड व्हाट इज the positive correlation students? Okay, good. Second types of correlation is negative correlation. So when the changes in the values of two correlated variables are in the opposite direction, the correlation between them is said to be negative. Means कोई भी two variables है correlated, उसमें if first variable is increases, so second variable is also decreases. Otherwise first variable is decreases, so second variable is increases. Like expenditure and savings. Suppose our expenditure is high, so savings is low. Clear? Otherwise our expenditure is low, so our savings is obviously high. Understood students? So what is the positive correlation and what is the negative correlation? Mainly minor difference between two types is in this positive same direction, and in negative correlation is opposite direction. So I hope you all are understood students. So please note down these both types of correlation. First one is positive and negative. Okay students, thank you.